Hello dear students, welcome to the class today. Children, how are you doing? Hope you all are doing fine. So, as you know, we are carrying on with the revision work. We have completed the revision work of the first chapter in the last video, where we were talking about the changes in history. We were talking about tracing the changes in history. How changes had happened. From ancient we moved to medieval history, and from medieval next year we'll be moving to modern history. That is what we have talked about. Children, today I thought that I would be revising because long back you all have done this chapter, but then all the chapters would be coming for your annual examinations. That's why I felt I should revise this chapter where we are talking about environment. Okay? Yes, a very simple chapter where we discussed about different components. पहले तो आपको ये समझना है the environment. What is the explanation of an environment? Okay, or everything that is around us, the place, the people, the thing, the nature, the place, people, thing, nature, surrounding any living organism, okay, surrounding any living organism is environment. Got it? ये explanations, these kind of explanations are important from 1 mark point of view. Got it, children? It is a combination जिसमें कि we have all kinds of animals divided into natural environment में we have in the natural environment we have biotic and abiotic. Got it? Biotic and abiotic, that means living organism, plants and animals, and non-living, that is land. Living organism, all the living, everything that is breathing, growing, developing, living में आ गया, and then non-living. नॉन लिविंग में क्या है? नॉन लिविंग में सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज लैंड. जमीन है, इट इज देयर, इट इज अ सोर्स ऑफ आवर नेचुरल एनवायरनमेंट. गॉड हैज गिवन अस लैंड एंड इट इज नॉन लिविंग. सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि डेवलप नहीं कर रहा है, लेकिन इट इज देयर, सो वी आर यूटिलाइजिंग इट, वी आर यूजिंग इट इन सम फॉर्म और द अदर. गॉट इट? So this was about the environment. Please let us understand about the components of environment. Okay, diagram के साथ you have to understand it. Where yes, some of you have made very beautiful diagrams. So you have to explain about the components of environment. क्या क्या है? What are the components? पहला तो natural है, फिर human made है, and then human environment. Okay, so components में first we have natural, जो नेचर ने हमको दिया है. Then you have human made.
God has given, the nature has given, उसमें हमने क्या कर दिया? We have done little bit of changes, little bit of reformation, and then we have the human-made environment. And the last is the human environment. Okay? इसमें क्या आ रहा है? नेचुरल में there are different categories. Got it? So in this natural category you have air, water, land and all the living things. So you have further air, water, land, got it? And all the living things. Biosphere. You know, these are the scientific names. There are the scientific names that has been given to all this because science में हम इसको अलग तरीके से पढ़ते हैं. Air is all about that is atmosphere. Okay. Water is hydrosphere. And land is lithosphere. Biosphere, atmosphere, lithosphere, hydrosphere and atmosphere. ठीक है, नाम याद रहेगा आपको. ह्यूमन मेड में क्या है? बहुत सारी चीजें हैं that human makes. बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, ये सब भी एनवायरनमेंट में आता है, ऑफ कोर्स. ठीक है. सो ह्यूमन मेड में यू हैव बिल्डिंग्स, रोड्स, पार्क्स, monuments. These are all human made. लेकिन can we imagine our life without this? ये सारा अगर नहीं हो, आप जिधर भी देखते हो वहां पे ये सारी चीजें नजर आ जाती हैं. Of course that is human made. Human being has made it. लेकिन it is such a part of our environment, such an important part of our environment. और उसके बाद ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है. इंसान मिलके एक एनवायरनमेंट बनाते हैं एंड दैट इज इंडिविजुअल, फैमिली, community. Got it? All the religious institution, religion, okay, educational, economic, political. This is all environment. This is all that is existing in our surroundings. This is all that is there which we find every time. हर चीज, इसके बिना हम अपना लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते. Can you imagine life without the educational institutions? No. Okay? Everything जो कि हम देख रहे हैं, मिल रहे हैं, समझ रहे हैं. And this all is making the environment look so beautiful. It is very important part of your environment. Got it? अब इसको हमको अलग अलग समझना है. Components. सबसे पहले we have understood about the components and now we are understanding about it separately. हर एक हमको डिस्कस करना है. We will be discussing about all these environments. Environment में two parts, two divisions were there, biotic and abiotic. Okay. सबसे पहले now what we are discussing is the natural environment. Got it? We are discussing about
natural environment. Land, water, air, plants, animals, these are all natural environments. ये सारे आपको पता है. Meaning you know lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere. अभी मैंने बता दिया. आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा. Remember? Yes, you might have. So lithosphere क्या है? What is lithosphere? This we are understanding. It is the solid crust, top layer of the earth. So lithosphere is the hard top layer of the earth. Hard top layer of the earth. Earth crust. Okay. इसमें क्या क्या चीजें हैं. अब इसके जो लिथोस्फेयर इज मेड अप ऑफ व्हाट ऑल मटेरियल्स. रॉक है, मिनरल्स है, थिन लेयर ऑफ सॉइल है, तो इरेगुलर सरफेस है, वेरियस लैंडफॉर्म्स है. लिथोस्फेयर पे ही हमको और भी चीजें मिलती हैं. वी फाइंड अदर थिंग्स ऑल्सो इन लिथोस्फेयर. व्हाट इज दैट? वी आर गेटिंग माउंटेन्स. ओके, माउंटेन्स, plateaus, plain, valley, etc. Okay, so these kind of landforms are found everywhere over the continents and also on the ocean floor. समुद्र के अंदर भी ये सारी चीजें हैं. Yes children, there are mountains inside the sea. Oh, you do not know that? Yes, this is very big information, because nobody knows the depth of the sea. Sea का depth किसी को पता है क्या? Nobody knows. And there are people say that there are mountains as big as Himalayas inside the sea. Some of the sea, the depth इतना ज्यादा गहरा है कि वहां तक ह्यूमन बीइंग पहुंच ही नहीं पाते हैं. ह्यूमन बीइंग कैनॉट रीच देयर. तो जहां तक पहुंचते हैं, टिल द प्लेस ह्यूमन बीइंग हैव रीच्ड, वहां तक की इंफॉर्मेशन है हमारे पास. बट व्हाट अबाउट अबव दैट? उसके ऊपर की कहानी कौन बताएगा? उसके अंदर की कहानी. गॉट इट? सो लिथोस्फेयर, जिसमें हमको फॉरेस्ट, अच्छा ये भी है, एक तो ये मिल गया. देन वी हैव फॉरेस्ट, ग्रासलैंड. Got it? Forest is there, grassland is there for grazing land, grassland for grazing, land for agriculture. Okay? And mountains, ये human settlements are there, मतलब घर जो बने हुए हैं, human settlements. This is what is lithosphere all about. हाँ, इतनी सारी चीजें हमको लिथोस्फेयर पे मिल रही हैं, तो आप इसको समझो. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, whenever you are explaining lithosphere, the components of the earth and the areas of the earth, उसको अपने आंसर को सपोर्ट करना है आपको. बाकी डायग्राम्स, such beautiful diagrams are there in this chapter. Okay, then next is hydrosphere. All the land that is there is lithosphere, and all the water that is there is hydrosphere. इसमें क्या है? वाटर सोर्सेज आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, जैसे रिवर, लेक, सी, ओशन. सो इट इज एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ऑन दिस अर्थ, इट इज इम्पॉर्टेंट एंड नीडेड फॉर ऑल. ओके, ऑल द domain of water, everything that is there in water body, like
river, lake, river is there, lake is there, seas, ocean. Okay. So all the living organism के लिए hydrosphere is also important. Are there? क्या हम पानी के बिना लाइफ इमेजिन कर सकते हैं? नहीं, वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर. लिथोस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर हो गया. नेक्स्ट क्या था? द नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर. यस डियर स्टूडेंट्स, next we are talking about atmosphere. एटमॉस्फेयर में क्या है? व्हाट इज देयर इन द एटमॉस्फेयर? इट इज ऑल द लेयर ऑफ एयर. जितनी हवा हमारे आसपास है, all that air is included in atmosphere. It is surrounding the earth. Gravitational force जो है वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है. नहीं तो क्या होगा? We will start flying. It is because of the gravitation that we are walking on this earth. Otherwise we'll start flying. हाँ, एटमॉस्फेयर हवा है ना, हवा में हम उड़ने लगेंगे. This gravitation force is not there in the space, so the people who go to the space they fly. Okay, thin layer of air. Thin layer of air that surrounds Earth. ठीक है, it is protecting us from all the harmful rays, scorching heat. सन का जो हीट आ रहा है एंड हार्मफुल रेज है, बहुत सारे गैसेस है, डस्ट है, वाटर वेपर है. तो एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस आ रहा है, इट इज चेंजेस इन द वेदर एंड द क्लाइमेट. whatever changes are there in the atmosphere, because of that there are changes in weather and climate. Okay, so this is all about the natural environment, what nature has given us. Okay, this is there and together ये सारे मिलके ये तो है ही, लेकिन something, there is something called as biosphere. Dear students, what is biosphere? It is the plant and animal kingdom together. Plants are dependent on animal and animals are dependent on plants. Yes. All the herbivorous animals that are there, which are eating grass and green things, they are dependent. Got it? So, plant and animal kingdom make biosphere. The whole of the biosphere that is there, it is constituting of the plant and the animal kingdom. इस चीज को आपको बताना है. Next, what we are understanding? We are understanding about the ecosystem. Ecosystem is very different. Ecosystem क्या है? Ecosystem is the complete plant and human beings. They are depending on their surroundings. आसपास की कुछ चीजें अगर नहीं रहेगी, it is very difficult to survive. It is for our life, it is for our survival that these things are required. Okay, so plant, animals and human beings depend on their surroundings. Natural environment में कितनी सारी चीजें हैं. When we are discussing about it in detail, we come to know about the importance of each one of these. हर एक का जो है इम्पोर्टेंस हमको समझ में आता है. So we have to be very particular about what is given here. So we are talking about plants, animals and human beings. Plants, animals and human beings depend on their immediate surroundings.
ये क्या हो जाता है, व्हाट इज दिस, व्हेन इट इज डिपेंडिंग ऑन द इमीडिएट सराउंडिंग इट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम. क्या है ये, दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स इकोसिस्टम. They are interdependent on each other, as well as relationship between the organisms that are there in the surrounding, and they form an ecosystem. Ecosystem क्या होता है, large rain forest is there, grassland is there, desert, mountain, lake, river, ocean and small pond है ना, वो भी ecosystem का part है. तो ecosystem में how every creature and every living being is dependent on each other, that is what is something very important. Next what we are discussing is, अभी हमने natural environment discuss कर लिया, now we are discussing about human environment. Let's understand what is human environment. Human environment में क्या है, that simple life is there, everybody is fulfilling their requirements from the nature that is there. तो human is living new ways, नए नए तरीके सीख रहे हैं to use and change environment. जहां पे हम रहते हैं, पहले लोग केव में रह लेते थे, people were living in the cave. Can we now live in the cave? No. Environment is changing, accordingly our necessity is also changing. जैसे जैसे माहौल बदलेगा वैसे वैसे चीजें बदलेंगी. व्हील इज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, ज्यादा से ज्यादा खाना प्रोड्यूस हो रहा है. बार्टर सिस्टम आ गया. अभी क्या है, बार्टर सिस्टम वॉज देयर. बार्टर सिस्टम में क्या था, यू एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स. सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, ट्रेड स्टार्टेड, कॉमर्स डेवलप्ड, बहुत सारी चीजें जो है ह्यूमन बीइंग हैव डेवलप्ड. ट्रांसपोर्ट बिकेम, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ट्रांसपोर्ट बिकेम फास्टर. इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन इज देयर, दैट्स व्हाई वी आर इंटरैक्टिंग लाइक दिस टुडे. ऑनलाइन सारी चीजें हो गई. ये कैसे हुआ, दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन. एंड कम्युनिकेशन हैज बिकम इजी एंड स्पीडी, बहुत ज्यादा. ओके, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट पे एक चीज समझना है, विथ टाइम नीड्स, क्या होता है, समय के साथ जरूरतें पड़ती हैं. नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वैरिड. जरूरतें लोगों की बढ़ती चली गई एंड उसके हिसाब से माहौल भी बदलता चला गया. ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट. लोगों ने अपने हिसाब से चीजों को बदल दिया. ह्यूमन, हाँ, अब ह्यूमन बीइंग क्या हो रहा है, दे आर लर्निंग न्यू वेज. ह्यूमन बीइंग्स आर लर्निंग new ways, okay, new ways and methods to change environment. New ways and methods to change environment. So when we are talking about environment, we understand कि because of all these changes that are happening, human being also needs to change. And उसके वजह से when the human beings change, तो माहौल पूरा बदल जाता है. तो how to live in this environment, किस तरह से रहना है, क्या क्या चीजें हमको करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए. अब बैलेंस इज नेसेसरी. अभी क्या हो रहा है, यू कैन सी सो मेनी नेचुरल कैलामिटीज हैपनिंग. ठीक है, नेचर्स डिजास्टर इज हैपनिंग. इट इज बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस इन नेचर. नेचुरल एनवायरनमेंट में बैलेंस खत्म होता जा रहा है. ओवर यूज कर रहे हैं हम चीजों को.
एज अ रिजल्ट उसका रिजल्ट आ जाता है, क्या हो गया है, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड नेचुरल हैजार्ड्स हैव इंक्रीज्ड। नेचर ने बहुत सारी चीजें, अब नेचर बदला लेने लगता है जबकि चीजें ठीक से नहीं होती हैं। गॉट इट? We must save the environment. This was the chapter. We have completed the revision work. Let's see the question and answers. Okay, children, come. Dear students, we have to discuss the question answers from this chapter environment. But before that, I wanted to show you some very colorful diagrams. Please see these diagrams, which is the first diagram is talking about the components of environment. You can just go through it once, children. आप देख लीजिए, इसमें ह्यूमन मेड, नेचुरल एनवायरनमेंट, सच ब्यूटीफुल पिक्चर्स आर हियर. आप इसको देख के, आपने पहले भी बनाया हुआ है, यू ऑल हैव मेड इट, बट वंस you can just go through it. Next is the domains of the environment. Got it, children? Domains, which areas are there, which parts are there, which is making the environment. So the areas, the parts that are constituting the environment, these are the major portions, these are the major things. आप देख लीजिए, इसमें एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है. All these are making the domain for the environment. Some explanations are here, children. I would request you to go through these explanations. हो सकता है 1 mark के लिए these questions could be asked. Got it, children? So please go through these explanations and try to do it. Try to solve these questions in this manner only. Got it? Then another thing that is there is, children, this is a ecosystem. We are talking about the diagram of the ecosystem. You can see how plant and animal kingdom is dependent on each other. Plants are looking after the animals. looking after क्या है? Plants खा के animals जिंदा हैं. एनिमल्स को देख के प्लांट्स के साथ एनिमल्स इंटरेक्ट करते हैं, तो दैट इज़ गुड फॉर द प्लांट्स एज वेल. गॉट इट? सो दिस इज़ व्हाट इकोसिस्टम इज़ ऑल अबाउट. अनदर एक्सप्लेनेशन हियर इज़ अबाउट बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में क्या था? पहले के ज़माने में पैसा नहीं होता था. देयर वॉज नो मनी इन द प्रीवियस टाइम्स. सो ऑल द एक्सचेंज यूज टू टेक प्लेस, गुड्स का गुड्स में ही एक्सचेंज होता था. ठीक है? मटीरियल exchanged for material only. This is called as the barter system. Got it, children? Now ecosystem, just now I had shown you the explanation for the ecosystem. Then the natural environment, which is existing in the nature. Ecosystem, of course, the relationship between the plants and the animals and the human being is ecosystem. And always remember, we need to maintain a balance of the ecosystem. If it goes disbalance, तो फिर क्या होता है? There are some natural calamities. आंधा, वो भूकंप आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी. This kind of things happen. Okay? Natural environment. The major components of the environment. What are the major components of the environment? That is there. Of course, just now we have done natural, human and human made. For examples of human made environment, I have shown you the diagram just now, children. In that diagram, the human made environment is mentioned there. Lithosphere. What is lithosphere? Okay. The 2 major components of biotic environment, that is there. Biotic mein you have the plants and the animals, because it is the living organism. Abiotic is non-living. Then biosphere. Biosphere is all that is existing in and around the environment. That is biosphere. इसके बाद टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग. ये तो आप पहले भी कर चुके हो एंड आई थिंक यू कैन ईजिली डू इट. And the match the following. Yes, this I would like to discuss in the online session, children. So when we are meeting at that time, we will be doing so that all the students get benefited out of it. Okay, children?
Then we have man modifies. You have to give the reasons. Give reasons why man modifies his environment. How do the human being modify their environment? इसके बारे में आपको explain करना है. And plants and animals, man modifies his environment because of his needs. एक ही आंसर है कि because of its needs. जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट को चेंज करने लगता है. दैट इज़ चेंज नहीं, एक्चुअली इट्स मॉडिफिकेशन. थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो बड़े बड़े रूप में हो जाती हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड एज द मॉडिफिकेशन. ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव completed the chapter, children. We'll meet in the next class. Till then, children, thank you so much and all the best to you.